आज के इस वीडियो में दोस्तों हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट। ये एक्चुअली है पार्ट 5 मेरे लेक्चर सीरीज का ऑन द चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ आवर मैथ्स एनसीईआरटी सिलेबस। चैप्टर का नाम आपको पता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करने वाले हैं, राइट। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है हमारे इस चैप्टर का। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के जो पार्ट्स है दैट इज पार्ट 1 2 3 4 वो जाकर के देख ले, और ये पांचवा पार्ट देख लेंगे तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है हमारे एनसीईआरटी सिलेबस की, जितने भी क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन को कराया विद अ गुड अमाउंट ऑफ डिटेल, ठीक है। तो आपको आई होप यू एंजॉय इट, और ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. I've already kept it here. Have a look. So this figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. Okay. So as you can see, if you see this point and this point, तो बाकी बचा हुआ, if you look at this point, so this is semicircular, right? This is a semicircle. Similarly, you will have a semicircle out here also, right? और उसी तरह से इनर, ये तो इनर में मैंने बनाया है, आउटर में भी सेमीसर्कल होगा। So निकालना क्या है? The distance between the two inner parallel lines. Okay, what are the inner parallel lines? So let me show it to you. What are the inner parallel lines? So ये अंदर वाली रेड वाली जो मैं बना रहा हूँ, this is the inner parallel line. Okay, so distance between the inner parallel line is given to me as how much? It is 60 meters. Okay, fine. So okay, distance between the two inner parallel lines is 60 meter, and they are 106 meter long. Okay, what does that mean? This means that ये जो distance है, this is 60 meter. Okay, okay, and how long are they? ये जो inner है या जो भी lines है, these lines are 106 meter long. Okay, okay, fine. Okay, okay, if the track is 10 meters wide, so ये जो track है ना, ये हमारा 10 meter wide track है. Okay, fine. So देखो, ध्यान से देखो क्या क्या निकालना है. Okay, once we are done with something, हमने कुछ निकाल चुके हैं already, and हम, as you know, in this exercise we are moving forward with question number 8 here. Okay, so how much this wide? This is wide by 10 meters. So जरा ये ध्यान रखो, ये कितना है? 10 meters. Okay, okay, the distance, okay, fine. Number 1, the distance along the around the track along the inner edge. Okay, inner edge मतलब ये वाली होगी inner edge, right? तो इसके along हमें distance निकालना है, ध्यान से देखो. So सबसे पहले ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ, इसके along मुझे आई कैन से ये डिस्टेंस निकालना है. तो इफ यू क्लियरली सी, ये जो मैंने डॉट किया है, डैश किया, सॉरी, डैश 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 बनाए हैं, उसमें सबसे पहले ये दो रेड लाइंस आती है, राइट? सो आई कैन से डिस्टेंस along, or sorry, not along, around, distance around the track along the inner edge, along the track along its inner edge. Okay, fine. So along the inner edge will be, सबसे पहले ये जो दो red lines मैंने बनाएंगे, they are 106 meters, right? So it will be 106 meters plus 106 meters. 106 plus 106. Along with these two red lines, 106 and 106, I have two semicircles, right? So there are two semicircles. So it will be nothing but 2 into perimeter of semicircle, or to be precise, perimeter of inner semicircle, अंदर वाला inner semicircle. Okay, so let's get this. So 106 plus 106 will be 212 plus 2 into perimeter of inner semicircle. So let's assume, okay, so talk about this semicircle, then what will be this? This will be the radius, right? Radius of the semicircle. Let's call this as small r. Okay, तो ये total 60 है. So ये अगर ये r है तो ये भी r है, तो therefore from here, quick calculation, 2r will be equal to 60. So r will be equal to 60 upon 2. So r will be equal to 30 meters. Okay, fine. So what is perimeter of a semicircle? सेमीसर्कल की बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, राइट? बराबर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, पर सेमीसर्कल उसका आधा होएगा, तो 2 पाई आर का आधा, हाफ, मतलब हाफ. सो फ्रॉम हियर, simple cancellation, this 2 and this 2 will get cancelled. So going ahead, this will be 212 plus 2 pi r. So this will be 212 plus 2 into pi. Pi is 22 upon 7 into r, radius. Radius is 30. Okay, fine. So look at the numerator here. Numerator is 2 into 22
into 30 divide by 7. Okay, so this is 188.57. So this is 212 plus 188.57. Okay, so do this calculation. So इसमें 212 ऐड कर दो बस. So this will be 400.57. Simple calculation, 400.57. तो यहाँ से हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया, डिस्टेंस अलोंग द अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, जो मैंने मार्क करके बनाया. ओके फाइन, लेट मी जस्ट इरेज दिस. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है. सो इन दिस केस इफ यू लुक केयरफुली, दिस ब्लू कलर पोर्शन इज योर ट्रैक, राइट? तो लेट्स फाइंड आउट नाउ द सेकंड पार्ट, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रैक. सो कैन आई से एरिया ऑफ द आउटर पोर्शन, ये बाहर वाले में से अगर मैं अंदर वाला निकाल दूं, नाउ व्हाट इज दिस अंदर वाला? दिस फुल इज योर अंदर वाला, राइट? इनर एरिया, बराबर. दिस फुल इज योर इनर एरिया. तो अगर मैं बाहर वाले में से, बाहर वाला मतलब टोटल पूरा बड़ा, उसमें से इनर इफ आई रिमूव, देन आई विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रैक, राइट? सो एरिया ऑफ द ट्रैक विल बी, एरिया ऑफ ट्रैक विल बी एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, या आउटर रीजन कह देता हूं उसे, या आउटर एज लिख सकते हैं, एज, माइनस एरिया ऑफ द इनर एज. सो लेट्स गेट दिस सेपरेटली. सबसे पहले एरिया ऑफ आउटर एज निकालते हैं. सो एरिया ऑफ आउटर, लेट्स गेट दैट. सो आउटर एरिया को जरा देखो, तो उस आउटर एरिया में कैन आई से, ध्यान से देखना, बाहर वाले को देखना. देखो बाहर वाले में सबसे पहले एक रेक्टेंगल आता है, ये ऐसा वाला, राइट? बाहर वाले की बात करो. सो इट्स लाइक अ रेक्टेंगल, आई एम गेटिंग अ रेक्टेंगल आउट है, एंड along with the rectangle I have two semicircles, right? So this is one semicircle and this is one semicircle. So let's start that. So this will be area of rectangle. So what is the area of a rectangle? It will be length into breadth, right? बराबर. So ये तो पता है, this is 106, but what will be the breadth? So it will be length into breadth, that is 106 into, what is the breadth? 60 plus 10 plus 10, right? बराबर. 60, बीच में 60, फिर यहाँ 10 और यहाँ 10. Okay, plus 2 into area of semicircle, area of, I can say, outer semicircle. So outer semicircle का जरा रेडियस निकालते हैं. तो ये होगा radius of the outer semicircle, right? From here to here, this will be capital R. So capital R will be small r plus 10, right? Please try and understand. From here to here is small r. If you see, from here to here it is small r, right? Okay, from here to here it is small r. So I can get capital R. How will I get capital R? So देख के ही पता चल रहा है, capital R will be small r plus 10, right? Small r, यहाँ से यहाँ तक small r है, plus 10, this is 10. So capital R will be, small r is how much? 30 plus 10. So 30 plus 10 will be 40. So this is 40 meters. Okay, so this will be 106 into 60 plus 10 plus 10 will be 80, plus 2 into area of the semicircle. Area of the semicircle will be half into pi into r square, right? Circle का pi r square, and this will be half into pi r square. So okay, but ये remember one small correction, mistake कर दिया. This will be capital R, not small r, क्योंकि outer की बात हो रही है ना, capital R. Okay, so ये half and half will get cancelled. So 106 into 80. So 106 into 80. How much is this? This will be 8480. Okay, this will be 8480 plus pi, that is 22 upon 7 into r square. How much is r square? It will be 40 into 40, right? Capital R की बात हो रही है. So 22 into 40 into 40 divide by 7. Okay, so this will be 5028.57. So 5028.57. So 8480 plus 5028.57. So add these two together. So 8428 tha, right? 8480. So add this 8480. So this will be 13508.57. So 13508.57 meter square. So इससे हमें क्या मिल गया? We got the area of the outer portion. Now let's get the area of inner portion. So area of inner निकालने के लिए, inner में भी देख सकते हो, it is a rectangle, right? So inner rectangle बनाना चाहूँ तो I'll just show you by some other color pen.
So yeah, so this is a rectangle, right? This is rectangle, green color, the red color, this represents the inner rectangle. So it will be inner rectangle plus the two semicircles on this side. This is one and this is one. So get the same thing. So inner wale ke liye it will be 60. If you look at the size of this one, this will be 60 into 106. So it will be 60 into 106 into 60 plus 2 times area of semicircle. डायरेक्ट लिखता हूँ 2 pi r square upon 2. ठीक है, I'm doing directly. Now 2 and 2 will get cancelled. Now this is 106 into 60. So 106 into 60. So this will be 6360 coming from here. So this will be 6360 plus pi r square. Pi will be 22 upon 7 into r square. R square will be 30 ka square. Okay, fine. So look at this. This will be 22 into 30 divided by 7. Okay, I'm doing this calculation. So this is 2828.57. So this will be 6360 plus 2828.57. Add this up. So 6360 को add करना है. Okay, I'm sorry, I have to add this. 6360 plus 2828.57. So this answer will be 9188.57 meter square. So now since you have the inner area and the outer area, दोनों को subtract करेंगे. So outer area will be 13508.57 minus 9188.57. So subtract करते हैं. So do this. So this is 13508 minus 9188. Chalo. So this will be 4320. So this answer turns out to be 4320 meter square. Okay, my calculations might be wrong at times, not sure, but answer concept remains the same. Okay, fine. So with this we complete with question number 8. Let's go on to the next question. Next question, question number 9. Okay, question number 9 has also a figure along with it. Okay, so we need to be careful while referring to this figure. Okay, so I'll take this figure. This is referring to 12.27. So I have to go here and come to 12.27. Okay. Okay, looks good. Let's make a start. थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, because a big figure is always good. Okay, come, let's start. So in the figure, AB and CD are the two diameters of the circle. Okay, so you have AB and you have CD, right? Clearly you can see these are two diameters of the circle perpendicular to each other. So perpendicular मतलब ये angle जो है ना, this is 90 degree. Okay, fine. Let's start. Okay, OD is the diameter of the smaller circle. तो ये जो छोटा circle है ना, उसका OD diameter है. Okay, fine. So it's very clear from here. If OA is 7, so OA मतलब OA will be nothing but the radius of the big circle, right? तो मैं capital R कह देता हूँ. It's the radius of the big circle, that is 7 centimeter. So let's say यहाँ पर हमारे पास दो circle है ना, तो capital R is let's say radius of bigger circle कहता हूँ मैं, radius of big circle. And जो छोटा circle है उसका radius को small r कहता हूँ. तो small r is radius of, I may say, small circle. Okay, so since now we know what is small r and what is capital R, it is quite clear from here. Okay, so चाहिए तो यहाँ सिर्फ r नहीं लिखता, या r भी लिखूंगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ 7 भी लिखूंगा तो भी चलेगा, right? It should be clear enough. So you know this guy is 7 centimeter. Okay, fine. Find the area of the shaded region. तो shaded region में कौन कौन आ रहा है? You can clearly see shaded region में छोटा circle आ रहा है, right? बराबर, ये छोटा circle आ रहा है. सिर्फ बनाने के लिए मैं इरेज कर दूंगा. तो छोटा सर्कल, तो सबसे पहले एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to area of small circle, right? Area of small circle. Okay, but we know capital R, right? हमें area or radius of the bigger circle पता है, that is 7 centimeter. But if you clearly see, what will be OD? तो OD will be equal to the capital R का radius, right? That is 7 centimeter. But if you see, this guy has radius small r, ये भी has radius small r, बराबर, छोटे वाले सर्कल का. तो can I say OD will be equal to 2 times r, right? So capital R will be equal to 2 times small r, right? बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है
छोटे वाले दो मिल गए तो बड़े वाले का रेडियस बना देंगे, राइट? सो स्मॉल 2r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, so r will be equal to capital R upon 2, so radius of the smaller one will be 7 upon 2 centimeter, या radius will be 3.5 centimeter. Okay, fine. तो छोटे वाले का मिल गया, प्लस कैन आई से these are shaded area में तो ये तो मिल गया, this will be pi into small r square, और small r भी पता है यहाँ पर. This will be again these two areas we also need to put into picture. This will be nothing but minor segments, right? So this will be 2 into area of minor segment जिसे हम कहते हैं, right? और इन माइनर सेगमेंट्स के बारे में मुझे पता है दैट दिस एंगल थीटा जो माइनर सेगमेंट बनाता है वो इट्स हाउ मच 90 डिग्री. ओके, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जरा उसका भी फॉर्मूला रिवाइज करो, क्या था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट was area of sector minus area of triangle, right? Area of sector minus area of triangle. Okay, so let's do this. Come on, area of sector minus area of triangle. So from here it is pretty clear that area of the sector, come on, let's evaluate this. This will be theta upon 360, that is 90 upon 360 into pi r square, that is pi into capital R का square. हाँ बराबर, क्यों कैपिटल R? क्योंकि कैपिटल R ये रेडियस की बात हो रही है. दिस इज ऑल कैपिटल R. स्मॉल r सिर्फ इसके लिए था बस, दैट्स इट. स्मॉल सर्कल के अलावा फिर स्मॉल r का यूज है ही नहीं. ओके, minus, okay, I'm sorry, I have to put a minus sign there, minus area of the triangle. What is this triangle? So if you look at this triangle, this is a 90 degree triangle, right? बराबर, ये ट्रायंगल की बात हो रही है. कौन से वाले ट्रायंगल की बात हो रही है? सेक्टर के साथ जो ट्रायंगल लगता है ना, उसकी बात हो रही है. एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ हाउ टू फाइंड दैट. So just to put forward things into picture, I'll just show you what triangle I am subtracting. So I am subtracting the area of this triangle, right? The area of this triangle. Or same color nahi karta, I'll just make it some separate color. Okay, so I have to subtract area of this triangle. So from here, since this is 90, what is the base and height of this triangle? Area of the triangle is half into base into height, right? So height भी आप देख सकते हो r है, base भी आप देख सकते हो r ही है, right? OB is the height and OC is the base and both are equal to r. R मतलब capital R. So area of this will be half into capital R into capital R. Okay, fine. So since you know capital R, let's put this. So 90 upon 360 will become 1 upon 4. Pi हो गया 22 upon 7 into capital R का square यानी 7 into 7 minus half into 7 into 7. Right? So from here, ये 7 cancel. 22 into 7 will be there in the numerator. 22 into 7 will be there in the numerator, and in the denominator we will have 4. So this is 38.5. How much is this? This is 38.5 minus 7 into 7 is 49. Divide by 2. 49 divided by 2 will be 24.9. Okay. So this is 38.5 minus 24.5. If you get this, this will be 14. So therefore, एक मिल गया इसका एरिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो लेट्स डू दिस. सो इट विल बी 2 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने निकाला 14. सो दिस इज पाई इनटू पाई मतलब 22 अपॉन 7 into small r. How much is small r मिला था? 3.5 का स्क्वायर, राइट? सो इट विल बी 3.5 into 3.5 plus 2 into 14 will become 28. ठीक है. So I'll give you this calculation for homework. Get this, and that will be the area of this blue portion, that is the shaded portion. Let's move on to the next question. That is question number, after question number 9, we'll move on to question number 10. Okay, so it looks very similar to what we have done earlier. So I think I can give you this as homework, but let's have a read through it. Okay, I have to see figure 12.28. Okay, so 12.28 matlab ye wala, this one. So let's look at this particular figure. Okay, let's do this. Okay, so let's start. So area of the equilateral triangle. So ये जो equilateral triangle already जो दिया है ABCD, उसका area हमें by default पता है. Okay, so very बहुत आसान है काम. Area of triangle मैं कहता हूँ, I already know. How much is that area of triangle? I have been given that area of the triangle is 173.20.5 centimeter square. Okay, fine. With each vertex at the center. So this is the center, right? Okay. And the of the triangle, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle, right? So all this is half the length. Matlab, if you see,
this will be the side, AB is the side of the triangle, but since all of them are equal, I can say of radius, so this will be R, this will be R, right? If I just say this distance will be R, this distance will be R, उसी तरह से ये distance will be R, this distance will be R, ये distance भी R, ये distance भी R, right? Okay, fine. So let's say AB, okay, since this is an equilateral triangle, AB will be equal to BC will be equal to AC. Let's call this as X. This is nothing but the side of the equilateral triangle. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है area of the shaded region. Okay, very interesting. Shaded region के area निकालने के लिए can I say this is a sector of 60 degree, right? This is also a sector of 60 degree, right? क्यों? क्योंकि equilateral triangle के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. All angles are 60 degree, right? Okay. So can I say out here, what will be the area of the shaded portion? So area of shaded portion out here will be triangle में से my subtract कर लो 3 sectors, right? So area of triangle minus area of minus 3 times area of sectors, right? There are 3 sectors that have to be subtracted. Okay, so area of the triangle तो मुझे पता है. How much is that? 17320.5 minus 3 into area of the sector मुझे नहीं पता, तो मुझे निकालना पड़ेगा. सबसे पहले do you know the radius? Radius भी नहीं पता, पर एक टेक्निक से निकालते हैं. You know area of the triangle और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है. अभी थोड़ी देर पहले किया था. इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज √3 into 4 into side square. Since side I have written x, so this is x square. So this is 17320.5. This will be √3. √3 is 1.73205, right? कहाँ से यूज कर रहा हूँ? यहाँ जो दिया है ना, ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है. इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, तो पहले x निकाल लो, वहां से हमारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा. सो ये देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्मूला में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1320.5 इंटू 4 और ये नीचे आ जाएगा. सो दिस विल बी 1.73205. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ दिस कैन बी इजीली कैंसल्ड. अगर जो हमारा पॉइंट है ना, उसको कितनी बार शिफ्ट करोगे? 1 2 3 4, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, राइट? सो दिस विल बी कैंसल्ड बाय दिस, एंड सिंस वील हैव 4 zeros, मतलब लाइक दिस. सो देयरफॉर फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर उल्टा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर विल बी, वहाँ 4 zeros मतलब 1000 बचा है, इंटू 4. नाउ एक्स विल बी, टेक रूट ऑन बोथ साइड्स, सो दिस विल बी 40000, राइट? 4 का होता है 2 और 4 0 हो जाएंगे, 2 0 आफ्टर द रूट. सो x इज नथिंग बट 200 सेंटीमीटर, राइट? ओके, सो वैल्यू ऑफ x इज 200 सेंटीमीटर. नाउ AB, कैन आई से आउट हियर AB, देख के पता चल रहा है, इट विल बी रेडियस प्लस रेडियस, राइट? सो इट विल बी 2 times रेडियस. सो AB, यू नो AB is the side, right? X is the side. So AB is 200 centimeter. So this is 200 will be equal to 2R. So 2R will be equal to 200. So R will be equal to 200 divided by 2. So radius will be equal to 100 centimeter, right? Radius will be equal to 100 centimeter. So from here we got the radius. Okay. अब एक बार सब कुछ पता चल चुका है, get the area of the sector. So area of sector, now since we know the radius, तो 1 मिनट का काम है. It is theta upon 360 into pi r square. और pi specifically बोला है 3.14 यूज करना. ओके, सो एंगल इज 60 डिग्री, राइट? ये जो सेक्टर है उन सब के एंगल 60 डिग्री है. डिवाइड बाय 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर. ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा बाय 6 के टेबल से. So if you look at the numerator, it is 3.14 into 100 divide by 6. Okay, so ये हो जाएगा. Okay, I have divided it by 6 twice, I guess. Wait a minute, I'll do it again. 3.14 into 100 okay, divide by 6. So इसको 5233 होता रहेगा. Okay, so this is 5233.33. okay, so area of the sector मिल गया. so यहाँ substitute कर दो, तो this will be 5233.33. so get this answer first. so this will be 17320.5 minus ये जो भी है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो. so this will be 15700. okay, 15700. so this will be how much? this will be 17320.5 17320.5 minus 15700. तो कितना होता है? this will be 1620.5. so how much is this? this is 1620.
20.5 centimeter square. So what is this? We got the area of the shaded region using this particular concept. Okay, fine. So बड़ा simple सा था. पहले ये shaded region निकालने के लिए triangle में से subtract the three sectors, right? We'll get the shaded portion. Okay, so with this we have completed question number 11. There are still 6 more questions to go, but before going forward, please make a note up till end. Okay, let's do this question number 11. Question number 10 के बाद let's do question number 11. And for question number 11, we have to look at this diagram, the one on the left side. Okay, so let me paste it in my software, and I'll remove this because this is the next question card diagram. Chalo, let's read this. A square handkerchief, 9 circular designs, each of 7 centimeter, are made on this. Okay, so हमने क्या किया है, एक square handkerchief पर we have made 9 circular designs. Okay, so 9 circular design देख सकते हो. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 circular design are made up of on a square handkerchief. Each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. Now this is interesting. ठीक है, देखो, if you see, you have made in a line or in a row you have made 3, right? तो अगर इसकी बात करूं तो इसका a radius होगा, right? This will be the radius of this circle. Similarly this will be also the radius of the circle, right? बराबर, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, फिर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस. उसी तरह से दूसरे, since they are all equal circle, तो ये भी एक रेडियस होगा एंड ये भी एक रेडियस होगा. फिर यहाँ पर से पकड़ूं यहाँ तक एक और रेडियस होगा, एक और रेडियस होगा, राइट? सो इफ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हाउ मेनी रेडियसेस आर देयर? देयर आर 6 रेडियसेस बिकॉज देयर आर 3 सर्कल्स. तो देयर विल बी 6 रेडियस. सो देयरफॉर अगर मैं कहूँ, सिंस दिस इज अ सर्कल, सो AB विल बी इक्वल टू BC will be equal to CD will be equal to AD, right? Since it's a square, and let's say the side of the square is x, and from this calculation this x is equal to 6 times the radius. Okay, very simple. Okay, this x is 6 times the radius. Now radius is given to me as how much? 7 centimeters. So what will be this x side of the square? It will be 6 into 7, that is x will be 42 centimeter. Okay, so हमें remaining portion निकालना है. Remaining portion मतलब from the square I need to remove these 9 circles, right? Design निकाल देना है. Design निकाल देना है, तो I'll get the remaining portion. Now what will be the remaining portion? Just to show it to you, this guy is the remaining portion. यहाँ पर this guy is the remaining portion, right? ये वाला सब remaining portion है, ये सब जो भी है, right? ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं. Okay, so in order to get the remaining portion, it's very clear that I can say area of remaining portion. मैं लिखता हूँ area of remaining portion will be area of the square minus area of square, or 9 circles, right? So minus 9 into area of the circle, area of circle, right? So बहुत simple है. Area of the square will be side into side, that is x into x, right? Into 9 into, what is the area of a circle? Area of a circle is pi r square. So this will be 42 into 42 minus 9 into pi 22 upon 7 ले लेते हैं into r square. R square will be 7 का square, radius is 7, right? So 7 into 7, right? So from this it's a very simple calculation. 7 and 7 will get cancelled. Going further, 42 into 42, how much is this? Let me do it by my calculator. 42 into 42 is 1764, right? So this is 1764 minus, look at the numerator now, 9 into 22 into 7, right? 9 into 22 into 7 will be 1386. So this guy is 1386. So subtracting this, we'll get the area of the remaining portion, that is 1764 minus 1386. How much does this turn out to be? This turn out to be 378. So this turns out to be 378 centimeter square. Okay, fine. Okay, so with this we complete part question number 11. Okay, fine. एकदम आसान सा था. Let's go on to the next part. The next part is out here, question number 12. Okay, question number 12 का diagram ये वाला है. Okay, so let's do it. Identify what's the issue and let's do it. Okay, so this is the question and this is the diagram. So let's take the diagram separately. Okay. Okay, fine. Wonderful. Let's start. So if you see question number 12,
what has been given to us. So OACB is a quarter of a circle. Okay, ये OACB, this is a quarter of the circle. तो quarter मतलब 90 डिग्री होगा, right? You should know कि अगर quarter है 360 होता है, उसको अगर हम 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो it will fetch you 90 डिग्री, right? ये पता होना चाहिए इतना, अब तक काफी सारे प्रॉब्लम्स में देखा है हमने. And the radius is 3.5 centimeters. So radius is given to me as how much? 3.5 centimeter. मतलब OA and OB are the radiuses, right? So OA and OB, it's very clear that they are the radiuses, and that is equal to 3.5 centimeter. Okay. Now OD is given to me as how much? 2 centimeter. So look at this carefully. OD is 2 centimeter. Con OD. Don't get confused, huh? OD is 2 centimeter. Okay, fine. Find the area of quadrant OACB. quadrant OACB मतलब पूरे quadrant का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला सबका पूरा. एंड सेकेंडली शेडेड रीजन का. सो फर्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ quadrant. So quadrant is nothing but it's a sector, right? Area of a quadrant will be nothing but theta upon 360 into pi into r square. So you know theta is 90 divided by 360 into pi, that is 22 upon 7 into r square. R square will be 3.5 into 3.5, right? 3.5 is the radius, so 3.5 ka square. So from here, this will be 1s, this will be 4. So now look at the numerator. So numerator is 22 into 3.5 into 3.5, okay, divide by 4, right? Denominator में 4 आ रहा था ना, cancellation करने के बाद there was 1 4 here, and then after that divide by 7. So this will be 9.625. कितना आता है आंसर? 9.625 centimeter square. So this is the area of the quadrant. Now if you look at the shaded portion, so shaded portion के लिए मुझे, can I say quadrant में, if I from the quadrant, if I remove the triangle, then I'll get the area of the shaded portion, right? बड़ा clear है. तो from here I can say area of shaded portion, या जिसे शेडेड रीजन भी कहा जा सकता है, will be area of quadrant minus area of triangle. Area of quadrant minus area of triangle. Okay, so now look at this. So area of the quadrant तो हमें पता है 9.625. Now look at this triangle. So this is a 90-degree triangle, right? So this is the base of the triangle, that is OB, and the height of this triangle will be OD, right? So it will be half into OB into OD, right? Half into base into height. So this is 9.625 minus half into OB. OB is how much? 3.5 into OD. OD is 2, right? पूरा OA नहीं लेना है, सिर्फ OD तक ही height है of this triangle. Okay, fine. So with this 2 and 2 will get cancelled. So this will be 9.625 minus 3.5. Okay, so 9.625 minus 3.5. So this will become 6.125. कितना आता है इसका आंसर? 6.125 centimeter square. So this is the area of the shaded portion. Okay, area of the shaded portion, very clear from here. Okay, so with this we have completed with this particular question. That is question number 12 is completed here. Okay, I hope there were no errors in the calculation. I just want to verify once again the numerator out here. So numerator is 22 into 3.5 into 3.5. I hope I have done it right, but I'm just confirming it. ठीक है, 22 into 3.5 into 3.5 डिवाइड बाय पहले 4 करना था, फिर डिवाइड बाय 7 करना था, राइट? ओके, दैट्स परफेक्ट. ओके, सो फाइन. विद दिस क्वेश्चन नंबर 12 here comes to an end. Let's go on to the next question. The next question will be question number 13. Okay, okay, so question number 13. उसके लिए फिगर 12.31 लगेगा, मतलब we need this particular figure. ये फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन का है. इसके लिए लेट्स मेक अ स्टार्ट. देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, so looking at this question I can say, okay, in figure 12.31, that means this figure, a square OABC is inscribed in a quadrant. Okay, so एक quadrant के अंदर, quadrant मतलब it's very clear that 90 degree, right? So quadrant मतलब it should be, this guy should be 90 degree. So ये 90 degree quadrant के अंदर हमने किसको inscribe किया है? We have inscribed a square. Okay, so this is a square.
OA is this much, so OA will be nothing but 20 centimeter जो दिया है, it's a square, so OA will be equal to AB will be equal to CB will be equal to OC, right? This will be 20 centimeter. The sides of these are nothing but the sides of the square, and we know the sides of the square are equal. Okay, fine. Find the area of the shaded region. Okay, very interesting. हमें यहाँ पर radius नहीं पता है. ये जो बन रहा है ना, क्या बन रहा है? This is my triangle, right? बराबर. Sorry, this is my square. But ये जो quadrant का OP will be the radius, right? OP या OQ की बात करो, OQ की बात करो, वो होगा radius, right? और वो radius ही पता नहीं है. कोई बात नहीं, radius पता नहीं है तो let's think on that aspect. So definitely you will say कि अगर मैं area of the quadrant में से area of the square निकाल दूं, right? If you remove the area of the square, this is your square, right? Very clear, this is your square. Square अगर मैं निकाल दूं, so if you remove the square, you will get the area of the shaded region, right? बराबर. That is this and this. Okay, fine. So let's first write that down. और वहां से हम रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे. सो फ्रॉम हियर आई कैन से एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be nothing but this will be equal to area of quadrant जो अब तक निकाला नहीं है मैंने उस, क्योंकि मेरे पास रेडियस नहीं है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना बहुत आसान है क्योंकि यू नो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी 20 into 20. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड गेट फर्स्ट द रेडियस. तो उसके लिए एक ट्रिक लगाना पड़ेगा. वी नीड टू ज्वाइन ओबी. हमें ओबी को ज्वाइन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? ओबी को ज्वाइन करना पड़ेगा. नाउ clearly OB will also be the radius, right? OP is also the radius, OQ is also the radius, तो OB is also the radius, तो मैं इसको R कह देता हूँ. ठीक है, now we can use this. So now you know in order to get R, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. OA is 20 centimeter, this is also 20 centimeter. So let's use Pythagoras theorem to get R. Okay, so I can say 90 के सामने वाला will be hypotenuse. So in triangle OAB, hypotenuse square, that is R square, will be 90 के सामने hypotenuse will be OA square plus OB square. So R square will be 20 square plus 20 square. So R square will be 20 square is 400. फिर से 20 square will be 400. So R square will be 800. 400 plus 400 will be 800. So R will be root of 800. How much is root of 800? So root of 800 निकालना बड़ा आसान काम है. I can write this as 800 को it can be written as 400 into 2, right? So radius will be 400 root के बाहर आके 2 हो जाएगा. So it will be 20 root 2 centimeter. Okay, how much is this guy? This guy is 20 root 2 centimeter, the radius of the sector. ठीक है, फाइन, या quadrant जो भी कह दो. तो सबसे पहले, so let's now since you know the radius, now we can apply the area of a quadrant. So area of a quadrant will be theta upon 360 into pi r square minus area of the square. Area of the square will be side into side, that is 20 into 20. Okay, so this will be 90 upon 360 into pi. Pi is 22 upon 7 into r square. R square will be 20 root 2 का square. Okay, this is be 20 into 20 will be 400, right? Simple. Okay, यहाँ simple cancellation से काम हो जाएगा. This will be 1 this will be 4 4 2 and ये 11 हो जाएगा. Now solve this. So 11 is there in the numerator and 20 root 2 का square. 20 root 2 का square मतलब r का square. So r का square is clear from here, that is 8 will be how much? R square is 800, right? So ये 20 root 2 का square करोगे, that is r का square, that is 800. So this is 2 into 7. 2 into 7 is how much? So 2 into this will be 2 into 7 minus 400. So from here, from this calculation, let's do the numerator first. So numerator is 11 into 800 divide by 2 divide by 7. Okay, so how much is this turning out to be? This will be 628.57. So this is 628.57 minus 400. So this will be 228.57 centimeter square. So what is this? This is nothing but the area of my
shaded portion जो हमें निकालना था. Problem, since we have completed question number 13, the next question will be question number 14, 15 and 16. I can give some part of it as homework, and while we'll do some parts here itself. Okay, so let's go on to this question number 14 now. It goes like this. This is question number 14 and diagram is out here upar. So let me just paste it here. This is my pasting of question number 14 and along with the diagram. Where is my diagram? The diagram is right out there at the top. Okay, so it's very simple. Maybe I can give you this for homework. Okay, let's read this question. So what's mentioned? Let's read it. AB and CD respectively are the two arcs of two concentric circle. So देखो ये एक arc है CD और ऊपर एक बड़े वाला circle का एक arc है AB, right? So there are actually two radiuses involved. Let's say this is the smaller arc, right? This is the smaller arc that is with radius small r. So let's say radius small r is equal to 7 centimeter, okay? And दूसरी वाली arc is having a बड़ा radius. दोनों का angle common है. This is your common angle of 30 degree. एक का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 7 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो ये जो शेडेड रीजन है, कैन आई से बड़े वाले आर्क में से, इफ आई रिमूव द पूरे बड़े वाले आर्क में से, इफ आई रिमूव द स्मॉल आर्क का पोर्शन, स्मॉल आर्क मतलब ये जो वाला पोर्शन है, देन आई गेट द शेडेड रीजन. सो वेरी सिंपल. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to, I can say, area of basically big sector minus area of small sector, right? Area of small sector. तो बड़ा simple है. I'll give this calculations for homework, but just tell you the formula. So area of the big sector will be theta upon 360 into pi capital R square. Okay, बड़े वाले sector का radius is capital R, that is 21 centimeter, while this is theta upon 360 into pi into small r square. Now theta, you know, it is 30 degree, so 30 degree upon 360 into pi, that is 22 upon 7 into capital R square will be 21 into 21 minus theta upon 360 यानी 30 upon 360 into pi, that is 22 upon 7 into small r का square, it will be 7 into 7. So from here do this calculation, and this is for your homework, and from here you will get the area of the shaded region. Okay, so with this we complete the question number 14. Okay, I have given those calculations for you all as homework. Come on, let's go on to the next question. The next question is question number 15, the second last question, and hence the chapter will come to an end here. Okay, fine. So going on to the next question, it is something like this. In the figure, so there is this figure, ABCD is a quadrant of the circle of radius 14 centimeter. Okay, so ABCD क्या है? एक ABCD तो ट्रायंगल भी है, प्लस ABCD इज अ क्वाड्रेंट. ओके, अब क्वाड्रेंट मतलब कौन सा रेफर हो रहा है? आई जस्ट हाईलाइट एंड शो इट टू यू व्हाट इज द क्वाड्रेंट. सो दिस पोर्शन इज द क्वाड्रेंट. ठीक है, जो अभी मैं लाइट में बना रहा हूँ. ठीक है, दिस पोर्शन इज द क्वाड्रेंट. ओके, यहाँ तक ही क्वाड्रेंट है जो, और क्वाड्रेंट के अंदर एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल तो बड़ा क्लियरली दिख सकता है आपको, ये जो मैं डार्क ब्राउन से बना रहा हूँ, दिस इज द ट्रायंगल. ओके, सो क्वाड्रेंट दिख गया, ट्रायंगल दिख गया. नाउ a semicircle is drawn with B. Okay, तो ये जो semicircle है, अब semicircle कहाँ दिख रहा है? So let me show it to you semicircle. So let me show it in another color, green color pen, और थोड़ा सा डार्क कलर भी यूज करूंगा तो भी चलेगा. ओके, सो ये देखो, ये रहा semicircle. ओके, तो तीन चीज है, क्वाड्रेंट, ट्रायंगल और semicircle. ओके, फाइन. तो let's start. So BC is a semicircle. Okay, find the area of the shaded region. So can I say ये दिस गाय इज नथिंग बट ये हमारा, ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, दिस इज योर माइनर सेक्टर, राइट? माइनर सेक्टर. सो माइनर सेक्टर को देखो, शेडेड पोर्शन को देखो, तो कैन आई से फ्रॉम द सेमी सर्कल इफ आई सब्ट्रैक्ट द माइनर सेक्टर, राइट? माइनर सेक्टर, सो आई विल गेट द एरिया ऑफ द व्हाट? शेडेड पोर्शन, राइट? बराबर. ये रहा सेमी सर्कल. प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, आई रिपीट अगेन. ये रहा सेमी सर्कल, उसमें से माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई विल गेट द शेडेड पोर्शन. सो देयरफॉर आई कैन से एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, area of shaded region will be equal to area of semicircle minus area of what? Area of minor sector, right? Area of minor, I'm sorry, minor segment. Now area of minor segment निकालना अभी आपको आता है. Area of minor segment will be
बेसिक फॉर्मूला जो हमेशा से लगाते हैं, सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, सो यहाँ पे बात करूँ तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस गाय गिवन टू मी? द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज 14 सेंटीमीटर. सो दिस गाय इज 14, दिस गाय इज 14. ओके, दिस इज वेरी क्लियर टू मी. और अगर ये 14 है, ये 14 है, तो देखो ये जो है ना BC, BC is nothing but the radius of the, I'm sorry, it's the diameter of the semicircle, right? So मैं कहूँगा ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, ये इसको मैं स्मॉल r कह देता हूँ, ठीक है, कैपिटल R, ये स्मॉल r. So what is capital R? Capital R is the radius of the semicircle, radius of semicircle, whereas small r is the radius of the quadrant, radius of quadrant, right? ये quadrant की बात हो रही है, ठीक है. तो small r is 14, but since this is a quadrant, this angle will be 90 degree. So let's start. Come on, मैं कर ही देता हूँ, बहुत simple है. So using Pythagoras theorem, can I say 90 के सामने is BC. So Pythagoras theorem से BC square will be AB square plus AC square, right? I am referring to this triangle here. Okay, fine. So BC square, you know BC is 2r, right? 2 times capital R. So 2 times capital R ka square will be AB square, that is 14 square, plus AC square, that is also 14 square. So this is 196 plus 196. This is 4r square. So 196 plus 196 will be 392. So this is 4r square. So taking this calculations a little bit further, what will be r square? So r square will be 392 divided by 4. Okay, so 392 divided by 4. Okay, so that is 98. So r square is 98. R square is 98. So what is r? R is root of 98. Very clear. चाहिए तो एक काम करता हूँ, I'll just say root of 98. उसका कैलकुलेशन नहीं करता, ठीक है, root of 98 सेंटीमीटर. Okay, so with this what have I arrived at? I have got my radius of the radius of the semicircle. ये भी मिल चुका है. Small r तो पहले से ही पता था. Okay, so let's apply. So area of the semicircle का area will be half into pi into capital R square. Why capital R square? Because ये semicircle का radius is capital R, right? बराबर, ये R और ये R, ठीक है. अगर कहना है तो पॉइंट इसको अगर मैं O कह दूं तो OB and OC will be the two radiuses of the semicircle, right? Minus area of the minor segment. Area of the minor segment यहाँ से मिलेगा. It is the area of the sector. तो sector का तो radius small r था, तो area of the sector will be theta upon 360 into pi into small r square minus area of the triangle. So triangle को देखो, ट्राइंगल का ये 90 डिग्री है, इसका बेस 14 है, हाइट भी 14 है, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज 14 into 14, राइट? प्रीटी क्लियर. So this will be 90 upon 360 into 22 upon 7 into small r square. Small r is 14 का square. So this will be 14 into 14 minus half into 14 into 14, right? Okay, fine. So this is nothing but this calculation. So this is 1 za, this is 4 za. Okay, so coming out here to this calculation, this will be 22 into 14 into 14. Okay, so this goes like this, divide by 4 divide by 7. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन यहाँ की कर रहा हूँ. सो ये पूरा कैलकुलेशन करके 154 आंसर आया, ठीक है. सो let us write that down, 154 minus 14 into 14 will be 196. 196 divided by 2 will be 98. Okay, it will be clearly 98. Fine. Okay, so subtract this. So if you subtract this from this guy, this will be 56 centimeters square. Okay, 56 centimeters square. Okay, so area of the minor segment is 56. Okay, so I have to do this calculation, half into 22 upon 7 into r square. Now r square, it is very clear that it is 98 minus 56. Okay, fine. So from here, this is a very simple calculation. Numerator देखो, it is 22 into 98. Okay, I'm sorry, not minus, it has to be multiplied. So 22 into 98 करना पड़ेगा, divide by 2 पहले, फिर divide by 7. Okay, so this is 154. So 154 minus 56, how much will this guy be? Let's check out. So 154 minus 56 will be 98. So this is 98 centimeter square. Okay, 98 centimeter square. So with this, we have evaluated the area of the shaded portion. Very simple. Okay, let's go on to the last question. Come on, let's finish up the last part of this
chapter. The chapter will get over. Okay, fine. So let's finish the last question, and this chapter area related to circles will then get over. Okay, let's start. ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड पोर्शन. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये जो डिजाइन बीच में बनी है ना, इसका निकालना है. ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल काम है. ये देखो, इस डिजाइन को है ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, ओके. नाउ एरिया ऑफ द डिजाइन पोर्शन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स. तो ये बेसिकली दो क्वाड्रेंट्स है और रेडियस दिया है, बड़ा सिंपल है, 8 सेंटीमीटर. सो कैन आई से दिस एरिया ऑफ द डिजाइन पोर्शन विल बी, इफ यू कैन स्प्लिट दिस अप. ओके, जरा सोचना. देखो, अगर इसको देखो, किसके बारे में बताता हूँ. अगर इसको देखो, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. कैन आई से दिस इज द माइनर सेगमेंट, राइट? बराबर, ये भी माइनर सेगमेंट है. और अगर इसको देखो, जस्ट टू शो इट टू यू इन अ सेपरेट कलर, दिस इज ऑल्सो अ माइनर सेगमेंट, राइट? तो एक काम करो ना, बड़ा सिंपल है. इट विल बी नथिंग बट दिस एरिया ऑफ द व्हाट रीजन, शेडेड रीजन, will be 2 times area of the minor segment, right? So area of shaded region will be, it is 2 times into area of minor segment. Okay, so how to evaluate the area of minor segment? हमेशा की तरह पता है हमें, area of minor segment निकाल ही लेता हूँ. area of minor segment, it is area of the sector minus area of what? Area of what? Area of my sector minus area of triangle. Okay, so since it's a quarter circle, so it will be theta upon 360 into pi into r square. What is the radius in this case? Radius is 8 centimeter, right? यही हमारा, अगर देखो तो एक quadrant बन रहा है ना, ये वाला, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है. सो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. सो थीटा दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 8, राइट? माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, लेट मी शो यू दिस फुल ट्राइंगल. सो ये निकालना पड़ेगा, राइट? इफ आई कंसिडर दिस फुल एज माई what I've considered this as my quadrant, right? तो बेसिकली ये ब्राउन पोर्शन कब मिलेगा? जब मैं फ्रॉम द सेक्टर आई हैव सबट्रैक्ट द माइनर सेगमेंट. ओके, सो this will be half into base into height. So base is also 8 and height is also 8 for this triangle, right? This is the base, this is the height, right? इतना तो अब तक क्लियर हो ही जाना चाहिए. So 8 into 8 will be 16, divide by 2. So 16, 8 into 8 is 64, divide by 2, so that is 32. Now do this calculation. This will be 1 this will be 4 so now let me do it. Okay, कुछ और कैंसिल होता है? yes, 1 ये 2 कैंसिल होगा. so now look at the numerator. numerator में है 22 into 8 into 2 divide by 7 minus 32. okay, let's do this. 22 into 8 into 2, so 22 into 8 into 2 divide by 7. okay, so this is 50.28. so this is how much? 50.28 minus 32, right? okay, 50.28 minus 32 करोगे तो that will be 18.28. okay, very simple. 18.28 centimeter square जो भी है. so this will be 2 into area of the minor segment will be 18.28. so जो भी है उसको multiply करो with 2. so 36.57. so how much is this? 36.57 centimeter square. so this is the area of the shaded portion. दो बार हमने जब किया, दो बार सेक्टर निकाला, सॉरी माइनर सेगमेंट को मल्टीप्लाई किया, तो आई गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन या डिजाइन पोर्शन, जो भी कह दो उसे. ओके, सो क्योंकि अब अच्छे से समझ में आ चुका था तो मैंने फटाफट किया, नॉट विद वेरी गुड हैंड राइटिंग, बट आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर इनफ. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद क्वेश्चन नंबर 16 एंड हेंस द चैप्टर areas related to circles is over here. Thank you so much for watching.